ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब तो इसमें क्या होगा फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, जिसमें जाती है उसको पहले लेते हैं, तो उसका लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इक्वल्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल या फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तब क्रिटिकल एंगल होगा, और 90 डिग्री जब रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से अगर साइन 90 की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आता है म्यू आर डी इक्वल्स साइन सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इक्वल्स साइन सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। म्यू ऑफ डी आर इक्वल्स 1 by sin c. Refractive index of denser medium with respect to rarer medium equals 1 by sin of angle of critical angle. ठीक है, important relation. उसके बाद एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में फर्स्ट हमारे पास मिराज बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, रेगिस्तान में आपने सुना होगा या फिर गए होंगे तो शायद देखा हो कि जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे पानी दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे पेड़ नहीं होगा वहाँ पे पेड़ दिखेगा, उसके पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होता है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये एप्लीकेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में भी आएंगे। ठीक है, जैसे ये सैंड की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ ट्री। ठीक है, उसमें क्या होता है, डेजर्ट में जो आपकी डेंस एयर्स हैं, डेंस एयर्स ऊपर आ जाती हैं तो ऊपर का मीडियम डेंसर हो जाता है बहुत ज्यादा, और नीचे का मीडियम रेयर रह जाता है। ये तो ऊपर का मीडियम तो डेंसर हो गया एयर से, और नीचे का मीडियम बहुत ज्यादा रेयर हो गया। ठीक है, अब जब डेंसर मीडियम से यहां से लाइट आई, मान लो हम जो भी चीज देखते हैं, क्योंकि हम उस चीज की रेस हमारी आईज पे पड़ती है तो वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये पेड़ हमें कब दिखेगा, जब इसकी रेस हमारी आंख में आएंगी। तो इसकी रेस चलते चलते जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट बेंड होती रहेगी। तो एक एंगल ऐसा भी होगा जिसमें रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और एक एंगल ऐसे भी होगा जिसमें रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऐसे भी होगा ना। तो कुछ ऐसी रेस आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। मान लो ये पेड़ इतना बड़ा है, ठीक है ना, यहां से रेस आई तो मीडियम चेंज होने की वजह से बैंड होगी, बैंड होके फिर ये ऐसे होगी और बैंड होगी रेयर मीडियम में आने की वजह से। तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ये वापस उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, वापस उसी मीडियम में चली गई, एक और रे आई, दो रे आई, ये आई, ये आई और ये आई। तो ये रे आपकी आइज में पड़ी, यहाँ पे आप ऊंट पे बैठे हो मान लो, ठीक है, आपकी आइज में पड़ी थे, तो इसकी रेज जब आपकी आंख में पड़ेंगी तो आपको दिखेगा कि ये पेड़ यहाँ पर है। आपको क्या लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही है, आपको लगेगा रेज यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। ठीक है, तो आपको लगेगा कि पेड़ यहाँ पे है, इसलिए इसको बैक ट्रैक करो रेज को, आपको दिखेगा पेड़ आपका यहाँ पे है, क्योंकि आपकी आंख में रेज ही वहीं से आ रही है। तो ये पेड़ धरती में दिखता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है या फिर वहां पे पेड़ है। ठीक है ना, ये होता है मिरर्स का कॉन्सेप्ट। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स पे भी क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है,
हम लेयर्स लेते हैं, 3 लेयर्स। एक तो रेयरर मीडियम की लेयर, एक ये जो लेयर होती है डेंसर मीडियम की, और फिर से रेयरर मीडियम की लेयर। ठीक है, ये रेयरर मीडियम होता है, ये भी रेयरर मीडियम होता है, और ये डेंसर मीडियम होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये भी रेयरर मीडियम है। तो हम ये ऑप्टिकल फाइबर है आपकी, ठीक है। तो हम जब इसमें लाइट भेजते हैं तो ऐसे एंगल से भेजते हैं जिसका क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे हम इंसिडेंस करते हैं इसमें लाइट। तो जैसे लाइट आती है तो रेयरर मीडियम में ना रिफ्रैक्ट होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देती है, और ऐसे बैंड जाती है, फिर ऐसे और ऐसे निकल जाती है। अब ऐसा रियल लाइफ में अगर ना समझ में आओ तो कैसे देख सकते हैं? रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? आप अपने रूम में एक ऑप्टिकल फाइबर लगा दो, ऑप्टिकल फाइबर का एक ओपन एंड आपके रूम में लगा दो और एक ओपन एंड आपके फ्लोर पे लगा दो, छत पे लगा दो। धूप की रेस आपके रूम बिल्कुल क्लोज कर दो, अच्छी तरह बंद कर दो, तो धूप की रेस जितनी उस पे आ रही होंगी, ऊपर आपकी फ्लोर पे एक एंड है, उस पे जितनी धूप की रेस आ रही होंगी टोटल की टोटल आपकी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आपके रूम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से सारी रेस ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट धूप आपके रूम में आ रही है, बल्कि आपका रूम क्लोज्ड है। ऑप्टिकल फाइबर का ये फायदा है। ऑप्टिकल फाइबर वीडियो सिग्नल्स भेजने के लिए यूज की जाती है, और ये इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट। इंडिया में कोई सरदार जी थे शायद, उन्होंने किया था, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला डिराइव करना है आपको कर्व सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं सोच रहा हूँ पहले कोई और टॉपिक ले लेता है। रिफ्रैक्शन हम देखा कि सिंपल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। 3 सरफेस बताई थी, तो स्लैब, एक लेंस और प्रिज्म, और भी बहुत सारी होती हैं, वैसे 3 मेन है, लेंस, प्रिज्म और स्लैब, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, नेक्स्ट topic we are doing is refraction through curved surfaces. Okay. Refraction through curved surface में एक curved surface होगा, उस पे एक principal axis, point object we have here, and the center of curvature for the curved surface we have here C, point object O. Okay, no polished surface because we have to do a refraction, so the surface is not polished from any side. It may, and for the easier calculation we drop a perpendicular here which we call N. This is P. P and N are very close to each other such that in calculation we can consider P as N and N as P. When incident ray falls on the surface, it gets refracted, form an image I. This is image I, and the normal we make from the center of curvature. This is normal N. Okay. This angle is known as angle of incidence because incident ray is making angle with the normal, that is incident angle of incidence, and the refracted ray, incident ray and the refracted ray, the angle the refracted ray is making from the with the normal is angle of refraction. Suppose this angle is alpha, this angle is gamma,
and this angle is beta. These angles are infinitely small such that we can consider tan alpha beta gamma equals sin alpha gamma equals alpha. They are very small angles. Okay, they are very small angles. Here we have alpha, beta and gamma, very small angles. Tan alpha is equal to sin alpha equals to alpha, and this is angle of refraction, this is angle of incidence. So now this is medium 1, that is rarer medium, this is rarer medium, this is medium 2, that is denser medium. Rays are traveling from the rarer medium to the denser medium. Okay, so refractive index of mu 2 with respect to mu 1, refractive index of denser medium with respect to rarer medium, that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. We can consider I and R equals sine of I and sine of R equals I and R. And mu 2 and mu 1, mu 2 with the, we can write as mu 2 by mu 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Okay now? So the cross multiply these. Mu 1 into I is equal to mu 2 into R. See this, we have to substitute value of alpha, beta or gamma in the place of I. So I here in this triangle, this ray is extending, suppose this point is A, this ray is extending A on N. So in triangle OAC, this is extending ray, extending line. So this is exterior angle. And according to exterior angle property, I is equal to alpha and gamma. So I is equal to alpha plus gamma. We write I mu 1, I is equal to alpha plus gamma, and mu 2 R in this triangle. In this triangle, this IC is extending to N to make exterior angle Y, gamma. So gamma is equal to R plus beta. So R is equal to gamma minus beta. R is equal to gamma minus beta. We solve the equation into alpha plus mu 1 into gamma is equal to mu 2 into gamma minus mu 2 into beta. Okay, then we take common from mu 1 and mu 2, so it will be mu 2 minus mu 1 into gamma, mu 2 minus mu 1 into gamma is equal to mu 1 alpha by plus mu 1 beta, mu 2 beta. Mu 1 alpha plus mu 2 beta. I should take pen. Okay, now substitute the, I told you that tan alpha is equal to alpha, so tan gamma is equal to gamma. So instead of gamma we write mu 2 minus mu 1 into tan gamma is equal to mu 1 tan alpha plus mu 2 tan beta. Now tan gamma in the triangle A and C, tan gamma is perpendicular by base, that is ON by NC. So tan mu 2 minus mu 1 AN by NC. I hope you understand. Tan gamma is perpendicular by base. Tan gamma is perpendicular, that is AN by base NC. Perpendicular over base equals mu 1 tan alpha. Tan alpha is perpendicular upon base, that is AN upon ON. AN by ON plus
mu 2 tan beta in this triangle perpendicular an upon base ni, an over ni. Okay, then an is cut because it's common. Take common from mu1 and mu2, and mu2 minus mu1, an is cut. Now putting the value of nc, that is nc here, center of curvature. The distance between the pole and the center of curvature is radius of curvature. Distance between pole and the center of curvature is r, radius of curvature. So we write it r, and the distance between pole and the eye is size of image, is v, and the distance between object and pole is u. So here nc is r, so we write mu2 minus mu1 over r. In place of nc we have written r equals mu1 over on, that is u, plus mu2 over ni, size of image, mu2 upon ni, that is v. Okay, so this is your formula, refraction formula. This formula is known as refraction formula. We can rearrange it like mu2 over v minus mu1 over u equals mu2 minus mu1 over r. This is your refraction formula. Coming to lenses, we have two types of lenses, that are convex lens and concave lens. So in the convex lens we have three types, that is double convex, then planar convex, then concavo convex. And in concave lenses we have three types: double concave, planar concave, and convexo concave. Double, plano, and concave. And the similar we have here in case of convex lens. It is known as converging lens, and the concave lens is known as diverging lens. How? Concave lens is this one. Now when the parallel rays come, it converges it into the focus, onto the focus. So it's always a diverging lens. And in the case of a convex lens, we have like this. When the parallel rays come, these rays are parallel to the principal axis. That's why they are called parallel rays. It does not converge it to the focus. Instead, it shows to convert it into the focus like this, and these rays are then retraced back. The final rays are considered these ones, and this lens is said to be diverging lens. Focus, a convex or a concave lens have focus on the same side, are same. Focuses on the same side of a lens are always same, irrespective of the type of lens. Okay. Rules for refraction through lenses. Rules for refraction through lenses. Suppose this is our lens. The parallel rays that come
goes through the focus this is your principal axis and this is your focus, this is your optical center and this is your focus too. The parallel rays come, they go through the focus, and if a ray comes from optical center then it goes undeviated. It goes undeviated. No refraction or reflection take place in case a ray goes through the optical center. And if the ray is coming through the focus like this, through the focus, it becomes parallel after refraction through the lens. Okay, these were the rules, and we have lens formula. Lens formula for lenses: 1 by f equals 1 by v minus 1 by u. I hope you know what v and u means, and if you don't know what v and u means, then you are on the wrong place. Okay, so we have mirror formula 1 by v plus 1 by u, and the lens formula 1 by f equals 1 by v minus 1 by u. Lens makers formula we have we have 1 by f equals mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. This is your refractive index, this is radius of curvature 1 and this is radius of curvature 2. This is a focal length. Okay, this is a lens maker's formula. Magnification I told you before. Height of input output, size of image over size of object. Input output, this is a way to remember it simply. Minus v upon o upon u, minus v over u is the formula for magnification. What happens when we flip the lens? Suppose we have lens maker formula 1 by f equals mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Suppose we take this lens in which one side is plane and one side is curved. So this radius of curvature for this surface we have r, and radius of curvature for this surface will be infinity. Suppose you cannot make any circle with this. If you make a circle, you will end up going to infinity. Radius of curvature for this type of circle will be infinity. So this is radius of curvature for this surface is infinity, and the radius of curvature for this surface is this r. So now putting this in the formula, one lens maker's formula equals mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. Now putting this r1 infinity and r2 we get f equals r over mu minus 1 for this type of lenses. Okay, and if we take this lens, r infinity for this and r for this, so you can consider r2 as infinity and r1 as r. So in this case, focal length equals r over mu minus 1. Similar. So irrespective of the case, we have one formula on flipping the lens: f equals r over mu minus 1. Okay. So next we have locations of image formation. You must have read it in your 10th class, so I won't be repeating. I will just read out some example for you. In case of a lens, convex lens, if we place an object on the infinity, image formed
image is formed on the focus and the size of image is point sized. Real image is always formed, but in case an object is placed between optical center and focus, a virtual image is formed. And the magnified, virtual and erect, power of a lens, you can take. Power is inversely proportional to focal length. Greater the focal length, less is the power. So we can implies that we can take a constant here equals kf. If the focal length is 1 meter, then the power of the lens is 1 diopter. Unit of power is 1 diopter when k equals 1. Okay. For convex lens, power is always positive, and for concave lens, power is always negative. We have lens maker's formula 1 by f equals this one. 1 by f equals mu minus 1 into 1 by r minus 1 by r2. And if P is equal to 1 by f, then P is also equal to, consider this as P. So this is equals to P. I hope you understand this. Power will have the same formula. P is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. If you are thinking then your concepts are not clearing by this, then because it's just a revision video, then wait for some time. I'll take up the questions after this. If you do all those questions with me, then most of your concepts will be crystal clear, because questions clears more concepts. Okay. Another point we have refraction through prism. Okay, I'll take up this now. We are looking into refraction through prism. Refraction through prism. Nice topic, बहुत ही अच्छा, पढ़ने में भी मजा आएगा, डिफिकल्ट भी होगा तो शायद थोड़ा सा, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. एक्चुअली होता क्या है इसमें, प्रिज्म होता है एक प्रिज्म, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज n. Okay, this is one refracting surface, this is another refracting surface. प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, इनको नाम दे दो A, B and C. A, B and C. ओके, ये प्रिज्म में आपका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है A, B and A, C. ओके, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. तो इसमें एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म है, A, B रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, A, C अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. सराउंडिंग में आपकी एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होगा, मतलब एयर रेयरर मीडियम है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, एंड द प्रिज्म इज डेंसर मीडियम. ओके, तो सपोज अ रे EF, suppose the ray EF is coming. This is incident ray. This is incident ray. This ray is coming as an incident ray. We make normal बना लेते हैं, क्योंकि तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देख पाएंगे. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, नॉर्मल की बात कर रहे थे. नॉर्मल मतलब ए बी पे परपेंडिकुलर.
ए बी पर परपेंडिकुलर और बी सी पर भी बना लेते हैं. ये बी सी पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री. Okay. Suppose this point is O, and after going through rarer medium, from rarer medium to denser medium, ray will deflect towards normal or away from normal. It will deflect towards normal. So this is normal. So it will deflect towards normal. Suppose it is deflecting and the ray entering the medium is Fg. This is Fg. This is angle of incidence. This is angle of refraction. Okay. And now it is, the ray is in denser medium. It will come out in the rarer medium. It will come out away from the normal. So it is getting bent and it is coming out G and H. So EF is entering ray, incidence ray, and GH is emergent ray. When an incident ray goes refraction more than one time, more than two times, then the final ray we call as emergent ray, not refracted ray. Okay. So this is R. Suppose this is R1, this is I1, and now for this Fg, this is incident ray. We consider this angle of incidence. It is angle of incidence, but we are naming it as R2. Okay. So for this angle of refraction, actually it is angle of refraction because it is refracting from denser medium to rarer medium, but we name it I2. Okay. Now in quadrilateral AFOG, we have angle A plus angle O equals 180 degree. In quadrilateral A, F, O and G, that is property of quadrilateral. Angle A plus angle O equals 180 degrees. Okay. And in triangle FOG, we have angle R1 plus angle R2 plus angle O equals 180 degree. Angle sum property. So from equation this and this, we have angle A equal angle R1 plus angle R2. I hope you understand this. So now this is emergent ray GH and this is EF incident ray. You do one thing. Extend these rays backward, forward and backward respectively. I am extending these. I have extended EF and now I am extending GH. The angle made by intersection of these two rays is known as angle of emergent, angle of deviation. So this will be our angle of deviation, which is represented by this sign. Okay, this is deviation angle. It says how much the ray had been deviated. It was initially going EF and this way, but it has deviated with the angle of deviation delta GH. Okay, this angle shows us angle of deviation. So we have to find angle of deviation here. So if we look at the triangle F, consider this, suppose N, F, N and G, we have this I1 and this whole is equal to I1, vertically opposite angle. So only this angle will be I1 minus R1. Okay ना, ये एंगल I1 माइनस R1 होगा और ये एंगल I2 माइनस R2 होगा, ये वाला एंगल. अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस ट्राइंगल में तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये एक्सटीरियर एंगल है. तो एक एंगल ऑफ डेविएशन I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के इक्वल होगा. ओके,
So angle of deviation we have I1 minus R1 plus I2 minus R2. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब इस वाली इक्वेशन से हमारे पास R1 प्लस R2 एंगल A है, तो इसको लिख देंगे I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। ओके, so now delta has become, angle of deviation has become I1 plus I2 minus A. That means angle of deviation directly depends on the angle of incidence. This is the point to be noted. Angle of deviation angle of incidence पे depend करता है. Okay, so angle of deviation is directly depending on the angle of incidence. Now angle of, we change it, angle of deviation plus A equals I1 plus I2. Further we have ABC prism, and the refractive index of the prism is N. N is the refractive index of the prism. We have assumed it previously. So now mu is the refractive index, or N we can also say, is equal to, according to Snell's law, sin I1 by sin R1 is equal to sin I2 by R2. Okay, so if we look closely, we calculate this, then we get I1, if we cross multiply this, I1 is equal to N R1, and putting this relation in the equation 2, or we can also place it here, we are placing it in equation 2, we get, in this equation, we are placing it in this equation, delta equals NR1 plus NR2 minus A. A is equal to, and we have taken common, R1 plus R2 minus A. So now N, R1 plus R2 we have from this relation is equal to A. So R1 plus R2 equals A minus A. Further, if we solve it more, angle of deviation is equal to, we have taken A as common, and minus 1, where N is the refractive index of prism. Okay, so we have found the angle of deviation, that is refractive index of prism. Now we have something called angle of minimum deviation. Angle of deviation depends, I've told you, angle of deviation depends directly on the angle of incidence. So to determine angle of minimum deviation, we find angle of deviation for different values of angle of incidence. For different values of angle of incidence, we find angle of minimum, angle of deviation. Suppose we have taken 5 to 10 readings, then we plot a graph from this. When we plot a graph, this is x-axis, this is y-axis, and this is, suppose you have angle of deviation, and this is your I1, angle of incidence 1, this is for angle of incidence IN. You take readings and plot those readings in this graph, you will get a graph like this. Now this angle for the graph is known as angle of minimum deviation, which is represented by delta M. Okay. For this angle, for angle of minimum deviation, we have angle of incidence is equal to emergent angle. That is, I1 is equal to I2 is equal to I,
And if this happens, then we obviously we'll have R1 is equal to R2 is equal to R, only for the angle of minimum deviation. We have a relation I1 plus I2 is equal to, we have a relation here, this one, I1 plus I2 is equal to A plus delta. Then when for angle of minimum deviation, suppose for angle of minimum deviation from this, I1 and I2 are equal, it will become 2I, and delta equals 2I by A. Delta will be equal to 2I by A. And suppose this is 2I, delta will be equal to 2I by A, then I will be equal to delta plus A by 2 equals to I, only for the angle of minimum deviation. Okay, and we have R plus R equals to this relation, from this relation R plus R equals to angle A, then 2R equals to angle A, then R equals to A by 2. Angle of refraction is equal to angle of prism by 2. And the refractive index, we have N equals to sine I by sine R. Sine R, I told you R1 is equal to R2 and A is equal to R plus R. From this R1 plus R2 we consider R1 is equal to R2 is equal to R. So R plus R equals to 2R and R is equal to A by 2. So putting this and this in this formula, I is equal to delta M plus A by 2 over sine of A by 2 sine. Okay, so this we have refractive index of the prism, if we want to calculate the refractive index of the prism. So that's all for refraction through prism. So this is another topic for you, that is dispersion of light. Important topic. Actually, when we suppose this is a prism, sorry for that curve, this is a prism, and when white light falls on this, suppose this is white light, when it falls on this, it gets dispersed in several lights. This is red, this is blue, this is green, this is violet. Okay, this is known as dispersion of light. Okay, why this occurs? Because the refractive index is inversely proportional to the wavelength, and we know that every color has different wavelengths. The wavelength of a red color is highest, then the refractive index is lowest for red color, and angle of deviation is directly proportional to refractive index from the formula this. Sorry. From this formula, angle of deviation is directly proportional to the refractive index of the prism, and from this formula, refractive index is inversely proportional to the prism. That implies that angle of deviation is inversely proportional to the wavelength. Red color has highest wavelength, and that is why it has minimum angle of deviation, red. Violet color has maximum wavelength, that's why it has maximum angle of deviation. Okay, and this deviated, suppose this is red, this is violet, and this deviated angle is known as angle of dispersion.
This angle is known as angle of dispersion. So if we want to calculate angle of dispersion, we will say angle of deviation for violet color maximum minus angle of deviation for red color. From this formula, angle of deviation for violet color is mu for violet color minus 1 into A, angle of prism will be constant, minus mu for violet red color minus 1 into A. Okay, we take A and one constant, it will be mu for violet minus mu for R A. That is angle of dispersion. Okay, so next topic is dispersive power. Remember this, dispersive power. डिस्पर्सिव पावर को कैसे लेंगे? डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन ओवर मीन डेविएशन. मीन डेविएशन को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे. एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. सो लिख दो म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए. मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन देख लो, डेल्टा एम होगा मीन डेविएशन. अब डेल्टा एम में म्यू एम रख दो, ये है ना डेल्टा एम, मान लो डेल्टा एम मीन डेविएशन है. मीन डेविएशन फिर म्यू मीन कलर के लिए माइनस 1 इंटू ए. तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो मीन डेविएशन के लिए, म्यू फॉर मीन माइनस 1 इंटू ए से ए कट. डिस्पर्सिव पावर हमारे पास आ गई म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू एम माइनस 1. ओके, दिस इज डिस्पर्सिव पावर. आपका ऑप्टिक्स में से रे ऑप्टिक्स कंप्लीट, आई मीन कंप्लीट नहीं, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट. इसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. इसके बाद करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फिर करेंगे वेव ऑप्टिक्स. ओके, बाय बाय.